जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ ये डीफ्रॉस्ट हो चुकी है बिल्कुल, तो हम इसको स्टेनर में डालते हैं और इसको वॉश करते हैं। जैसे कि आपके पास ये चिकन आ गई है, तो नाउ यू कैन टेक दिस अदरक लहसुन पेस्ट एंड आप इसके अंदर डालेंगे अकॉर्डिंग टू इट, जैसे कि एक अच्छी तरह या थोड़ा सा और आपने डाल दिया। जो आपके टमाटर उसमें हमने पीछे का और आगे का हिस्सा जो है वो काट दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको लंबा लंबा जो है वो करना है ऐसे। एक आपने इसमें अच्छी तरह इसको लाइक दिस, यू हैव टू कट दिस ऑफ ऐसे। कि आपके पास ये जो टमाटर हैं वो सारे कट ऑफ हो गए हैं और इसमें हरी मिर्ची भी हमने डाल दी हैं। अब आप इसको ग्राइंड करेंगे। यू कैन यूज़ मिक्सर एंड आई एम यूजिंग दिस मिक्सर टू हेल्प दिस आउट। As you can see here, this paste is ready, all ready to go। टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी हमने ऐड किया है ताकि पेस्ट ये बन जाए। यहाँ पे आपकी चिकन भी मैरिनेट हो गई है। अब आपने एक सॉस पैन लिया है जो कि हीट अप हो रहा है। सो आई एम यूजिंग दिस एवर कुकिंग ऑयल, इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है और इसको आपने बिल्कुल स्लो आंच पे लाइक मीडियम पे रखना है जब तक कि आपका हीट अप हो। तो आपने इसको मीडियम से आपने लो कर देना थोड़ा सा। अब जैसे कि थोड़ा हीट अप हो रहा है, वी विल ऐड चिकन इनटू इट। अच्छा, इसे जब तक भूना जब तक ये वाइट ना हो जाए। तो आप मीडियम कर दें थोड़ी सी।
दही को जो योगर्ट है आपकी उसको थोड़ा विस्क कर लें ताकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ना आए। और ये हमने ऐड किया यहाँ पे गरम मसाला।